कस्याः जनकः? जवाहरलालः इंदिरायाः जनकः। इंदिराया जनक। कृष्णः रुक्मणी पतिः। कृष्ण रुक्मण्याः पतिः। रुक्मण्या पति। सुंदरम। रुक्मण्या पति। लक्ष्मणः रामः अनुजः। लक्ष्मणः रामस्य अनुजः। रामस्य अनुजः। सुंदरम। रामः भरतः अग्रजः। रामः भरतस्य अग्रजः। रामः भरतस्य अग्रजः। भरतः। रामः अयोध्या नृपः। रामः अयोध्यायाः नृपः। अयोध्यायाः नृपः। उत्तमम्। सुमित्रा कौशल्या भगिनी। सुमित्रा कौशल्यायाः कौशल्यायाः भगिनी। कौशल्यास्य नहीं, कौशल्यायाः। क्या बोलेंगे? कौशल्यायाः। कौशल्याः नहीं, याः। कौशल्यायाः। एक और याः जोड़ेंगे, ठीक। कंसः कंसदेवक्याः सहोदरः। देवक्याः कंसः देवक्याः सहोदरः। कंसः कस्याः सहोदरः? कंसः देवक्याः सहोदरः। सहोदरः। हाँ, सहोदर का मतलब क्या होता है? सहोदरा, जुड़वा। जुड़वा भाई बोलते ना, एक ही माँ से जन्म लेने वाले को सहोदर कहते हैं। ठीक, एक साथ जन्म लेने वाले को भी सहोदर कहते हैं। जुड़वा जो होते उनको सहोदर कहते हैं। अस्तु अस्तु महोदय जी। एतत् गृहं द्वारम्। एतत् गृहस्य द्वारम्। गृहस्य द्वारम्। सः नगरं मुख्यः। नगरस्य मुख्यः। शिवः पार्वतीपतिः। शिवः पार्वत्याः पतिः। पार्वतीयाः नहीं, पार्वत्याः। जैसा लिखे आप मेरे ख्याल से लिख सही रहे होंगे, और बोलने में दिक्कत हो रही तो बोलने का भी अभ्यास। पार्वत्याः पतिः। सुंदर। ठीक है, इस तरीके के और वाक्य भी दे रखे जिनका हम प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं। अन्य वाक्यों को भी बना सकते हैं। आगे हमने उसके बाद पढ़ा था पिपासा अस्ति किम आवश्यकम। जलम आवश्यकम। जलम आवश्यकम। पिपासा अस्ति जलम आवश्यकम। पिपासा अस्ति जलम आवश्यकम। पिपासा अस्ति दुग्धम आवश्यकम। पिपासा अस्ति दुग्धम नास्ति। जलम आवश्यकम। जलम आवश्यकम। बुभुक्षा अस्ति चायम आवश्यकम। बुभुक्षा अस्ति चायम आवश्यकम। परीक्षा अस्ति तर्हि किम आवश्यकम। भोजनम आवश्यकम। परीक्षा अस्ति भोजनम आवश्यकम। पठनम आवश्यकम। परीक्षा अस्ति पठनम आवश्यकम। पुस्तकम आवश्यकम। ध्यानम आवश्यकम। भोजनमपि आवश्यकम, परम अत्यावश्यकम नास्ति। न अस्ति तथापि किंचित चलिष्यति। अग्रे पुष्पम आवश्यकम। जिगृतुम किम आवश्यकम। घ्रातुम जिगृतुम। सूंघने के लिए क्या जरूरी है, क्या चाहिए। पुष्पम आवश्यकम। पुष्पम आवश्यकम।
सूर्यमुखी पुष्पम आवश्यकम। अस्तु, किम किम आवश्यकम? महोदय हम्म? महोदय सूंघने को क्या बोलते हैं संस्कृत में? घ्रातुम, घ्रातुम, सूंघने के लिए घ्रातुम, और जिग्रति मतलब सूंघता है, सूंघती है। ठीक, अस्तु सूंघना, महोदय। जिग्रति। क्रियापद अभी आएंगे, बताऊंगी तब, है ना। ठीक, अधुना वदन्तु किम किम आवश्यकम। अस्तु, विद्यालये किम किम आवश्यकम भवति? पुस्तक आवश्यकम्, शिक्षकः किम आवश्यकम? शिक्षक शिक्षिका आवश्यकम, छात्र आवश्यकम, शिक्षकः आवश्यकम, छात्र आवश्यकम्, जलम आवश्यकम, कक्षा कक्षा आवश्यकम, छात्रा कक्षा, शिक्षक क्रीडांगणम आवश्यकम, पुस्तकम आवश्यकम, पुस्तकम आवश्यकम, पुस्तकालयः, डिसिप्लिन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अनुशासनम आवश्यकम, अनुशासनम आवश्यकम, अनुशासनम आवश्यकम, फलम आवश्यकम। लेखनी आवश्यकम। वहां पर हम जो आकारांत इकारांत शब्द है उनके लिए आवश्यकी शब्द होता है, लेकिन अभी हम शुरुआत में पढ़ रहे थे, आवश्यकम अकेले शब्द का प्रयोग करके भी वाक्य बोल सकते हैं। ठीक है, आगे है पुष्पम आवश्यकम, पठन समय पुष्पम आवश्यकम, पठन समय पुष्पम मास्तु, पुस्तकम पुष्पम मास्तु, समय पुष्पम मास्तु। हाँ, अग्रे वृक्षकर्तनम आवश्यकम, वृक्षकर्तनम आवश्यकम, वृक्षकर्तनं मास्तु, वृक्षकर्तनम मास्तु। अन्य किम किम मास्तु? जल प्रदूषणम मास्तु। किम किम मास्तु? जल प्रदूषणम, जल प्रदूषण मास्तु, युद्धम, हिंसा मास्तु, कलह मास्तु, युद्धम मास्तु। सम्यक। किम किम मास्तु? क्या क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, जल अति जल हिंसा मास्तु, हिंसा मास्तु, हिंसा मास्तु, युद्धम मास्तु, रोदनम मास्तु। है, बालकः रुदति, रोदिति, किम करेति? रोदनम मास्तु, माता करेति रोदनम मास्तु। शयनम कुर्वन्ति, शयनम आवश्यकम, शयनम, शयनं मास्तु, शयनम मास्तु, शयनम मतलब शयनम। रात्रिकाले किं कुर्मः वयं सर्वे? पर्यङ्के किं कुर्मः? रात को हम सभी क्या करते हैं? मैम सोते शयन, शयनं कुर्मः। किं कुर्मः? शयनं, शयनं कुर्मः। अस्तु, अन्यत् किं किं मास्तु? पठनम् आवश्यकम् आलस्यं मास्तु, आलस्यं मास्तु, क्रोधः, क्रोधः आवश्यकम्, कौटिल्यं मास्तु। हाँ, यद् न कर्तुं शक्यते, न करणीयं तत् वृक्षकर्तनं मास्तु, फलत्रोटनं मास्तु, अतिजलव्ययः मास्तु। अस्तु, अग्रे पर्याप्तं यथा अस्ति, इतोपि आवश्यकम्, एकदा जलं पीतं, द्विधा पुनः पृच्छन्ति। वीडियो ऑन अस्ति? सर किम् अभवत्? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। एकदा विरमतु भो, एकदा। किं किं मास्तु? भवन्तः तावत् वाक्यानि वदन्ति। किं किम् अस्तु, किं किं मास्तु? हिंसा मास्तु, प्रदूषणं मास्तु, पुस्तकम् आवश्यकम्, पुस्तकम् आवश्यकम्,
एषा चालयति न पुनः करणीयं भविष्यति। दृश्यते अधुना स्क्रीन् दृश्यते? न महोदय। महोदय। ओदनं पर्याप्तम्। हाँ, पर्याप्तम्। अधुना वयं पठामः ओदनं पर्याप्तम्। आम्, ओदनं पर्याप्तम्। किं वदन्ति? इतोपि स्वीकरोतु, और लीजिए, और आपको नहीं चाहिए कि नहीं इतना काफी है, अरे ओदनं पर्याप्तम्। किं पर्याप्तम्? ओदनं पर्याप्तम्। यथा एवं वदन्ति ओदनम् आवश्यकं न, ओदनं पर्याप्तं। किं वदन्ति? ओदनं पर्याप्तम्। ओदनम इत्युक्ते चावल, भात है ना, चावल कह सकते, भात कह सकते, राइस कह सकते, और चाहिए चावल तरी ना, ओदनम पर्याप्तम। तक्रम आवश्यकम, तक्रम आवश्यकम, पर्याप्तम। इतोपि पायसम आवश्यकम, पायसं पर्याप्तम्। पायसम पर्याप्तम। पर्याप्तम, पर्याप्त इत्युक्ते पर्याप्त, काफी है। पायसं पर्याप्तं। व्यञ्जनम् आवश्यकं, व्यञ्जनं पर्याप्तं। एवमेव पर्याप्तं यद् इतना आवश्यक, इतना पर्याप्त है, तर्हि तत्र पर्याप्त शब्दस्य पर्याप्तं, व्यञ्जनं पर्याप्तं, पठनं पर्याप्तम्। अधुना अलम् एतावदेव न, पर्याप्तम् एतावदेव पर्याप्तं। गमनं कुत्रापि गमनं न पर्याप्तम्, अधुना न गमनीयमस्ति। शयनं पर्याप्तं, हसनं पर्याप्तं, वदनं पर्याप्तं। किसी सेंटेंस में आप पर्याप्तं शब्द बोल सकते हैं। अस्तु, अग्रे अस्ति क्रियापदानि वयं जलं पर्याप्तं। एवं कथयामि, अन्यत् स्वीकरोतु, पुस्तकं न पर्याप्तं। भोजनं पर्याप्तं, लेखनी पर्याप्त। लेखनं पर्याप्तं, पर्याप्तम्। दुग्धं पर्याप्तं, युद्धं पर्याप्तं। युद्धं तो कदापि पर्याप्तं भवति न। अस्तु, वाक्यप्रयोगे कथं? अस्तु अस्तु, दुग्धं, क्षम्यतां, दुग्धं पर्याप्तं, सुन्दरम्। अग्रे चलामः, क्रियापदानि। बालकः पठति, बालकः किं करोति? पठति नास्ति, पठति, ठ। बालकः किं करोति? बालकः पठति। कः पठति? बालकः पठति। बालकः पठति। बालिका लिखति। बालिका किं करोति? बालिका लिखति। बालिका लिखति। बालकः पठति। बालकः किं करोति? बालकः पठति। बालकः पठति। बालकः क्रीडति। हाँ, वदतु। पठति न, ढ नास्ति, ठ अस्ति। बालकः पठति। बालकः क्रीडति। बालकः किं करोति? क्रीडति। बालकः किं करोति? बालकः क्रीडति। बालकः क्रीडति। बालकः उपविशति। बालकः किं करोति? उपविशति इत्युक्ते उत्तिष्ठति, उपविशति। उपविशति, उपविशति। बालकः किं करोति? बालकः उपविशति। उपविशति नहीं, उपविशति। महोदय, हाँ महोदय, उपविशति का मतलब क्या होता है? उपविशति, मां द्रष्टुम शक्नुवन्ति? मुझे देख पा रहे आप लोग? महोदय। अहं यथा करोमि तथा पश्यन्तु।
उपविशति अहम् उपविशामि उपविशामि इत्युक्ते आसन्दः अस्ति आसन्दस्य उपरि मुदित महोदय किं करोति उपविशति किं करोति उपविशति उपविशति अर्थ ज्ञात अर्थ ज्ञात समझे अर्थ क्या कह रहे हैं आम महोदय अस्तु महोदय हाँ आम महोदय विशति का अर्थ क्या होता है अर्थ यही तो बताया मुदित महोदय अधुना किं करोति स्म किं करोति पश्यतु बैठना 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 इति वक्तव्यं न उपविशति उपविशामि बैठना ऐसा हिंदी में नहीं बोलना क्रियां दृष्ट्वा संस्कृते वदतु मुदित महोदय उपविशति किं करोति उपविशति उपविशति गायकः गायति गायकः किं करोति गायति गायकः किं गायकः गायति गायकः किं करोति कः गायति गायति अध्यापकः पाठयति अध्यापकः पाठयति अध्यापकः किं करोति पठति करोगे तो पढ़ता अस्ति है ना पाठयति इत्युक्ते अहं किं करोमि पाठयामि है ना तर्हि अध्यापकः पाठयति अध्यापकः किं करोति पाठयति अध्यापिका पाठयति अध्यापकः पाठयति शिक्षकः पाठयति शिक्षिका पाठयति ये पाठयन्ति तेषां सर्वेषां कृते वाक्यप्रयोगं कर्तुं शक्नुमः अध्यापकः पाठयति प्राचार्यः पाठयति गुरुः पाठयति तर्हि तत्र पाठयति इति च अग्रे बालिका हसति बालिका किं करोति बालिका नहीं दृष्ट्वा वदन्तु बालिका बालिका हसति हसन्ति न हसति बालिका हसति बालिका किं करोति बालिका हसति सुंदरम बालिका हसति बालिका हसलिए अग्रे चलामः हसलिए हसितवती अधुना नर्तकी हसति ह्रस्व हसति जी अग्रे नर्तकी नृत्यति नर्तकी किं करोति नर्तकी नृत्यति नृत्यति नर्तकी किं करोति नर्तकी नृत्यति का नृत्यति नर्तकी नृत्यति है ना वृद्धः हाँ महोदय जब हम किसी लड़की के में पूछेंगे तो हम का नृत्यति ऐसे पूछेंगे या क नृत्यति पूछेंगे का बोलेंगे का स्त्रीलिंग में बोला जाएगा का नृत्यति नर्तकी नृत्यति का हसति बालिका हसति का वदति बालिका वदति और यदा पुरुषः भवति कः गच्छति वृद्धः गच्छति कः वदति वृद्ध बालकः वदति कः हस बालकः हसति कः और का इन दोनों में भेद यदा बालकः भवति पुरुषः भवति तर्हि कः यदि महिला भवति तर्हि का अस्तु प्रश्नं कुर्मः प्रश्न यदा करते हैं जब करते तब का इति वदन्ति यदा पुल्लिंगे पूछा जाता है पुल्लिंग में तदा कः इति अस्तु महोदय सम्यक् उत्तमं प्रश्न उत्तमः प्रश्न वृद्धः गच्छति कः गच्छति
वृद्धः किं करोति वृद्धः गच्छति मातामही कथयति का कथयति मातामही मातामही कथयति मातामही किं करोति मातामही कथयति अस्तु सुन्दरम् अधुना यदा वयं कथयामः कोऽपि अस्मभ्यं किमपि ददाति कोई हमें कुछ देता है कुछ आप पूछते तो वो जवाब दे देता है ना तदा वयं वदामः थैंक्स इति वदामः अधुना थैंक्स न वक्तव्यं किं वदामः धन्यवादः किं वदामः धन्यवादः किं वदिष्यन्ति सम्यक् अधुना अत्र अस्माभिः प्रयोगं कृतमासीत् आवश्यकं मास्तु तत्र पञ्चवाक्यानि वदामः अधिकं नैव तत्र आवश्यकं मास्तु इति यदा जलम् आवश्यकं तर्हि जलम् आवश्यकं जलं पर्याप्तम् आवश्यकं मास्तु तीनों प्रयोग कर्तुं शक्नुवन्ति धनम् आवश्यकं धनम् आवश्यकं प्लावनम् आवश्यकं ना भाग जाना है डर के घबरा जाना पलायनम् इत्युक्ते भवितुं जीवनम् आवश्यकं आवश्यकं ज्ञानम् आवश्यकं कोलाहल आवश्यकं धूम्रपानम् संस्कृतम् आवश्यकं आवश्यकं पापम् आवश्यकं पुण्यम् आवश्यकं आवश्यकं क्रीडनम् आवश्यकं अधुना पुनः तत्र यथा वयं पठितवन्तः गच्छति आवश्यकं मास्तु उत्तमं सः गच्छति सः किं करोति सः किं करोति सः आगच्छति सः किं करोति आगच्छति गच्छति इत्युक्ते गच्छति गमनं करोति आगच्छति आगमनं करोति सः किं करोति आगच्छति सः पठति सः किं करोति सः पठति सः लिखति सः किं करोति सः लिखति सः क्रीडति सः किं करोति क्रीडति सः क्रीडति बालकः क्रीडति सः क्रीडति सः किं करोति सः वदति अहं किं करोमि वदामि सः वदति सः किं करोति वदति है ना वदति सः वदति सः पिबति सः किं करोति सः पिबति सः खादति
सः किं करोति? प्रश्न अस्ति कस्यचित्? प्रश्न है किसी का? कुछ पूछ रहे? न महोदय। पर्याप्तम्। हाँ पर्याप्तम्। सः खादति। सः किं करोति? खादति। लिखति। सः लिखति। सः किं करोति? सः लिखति। सः पठति। सः किं करोति? पठति। यथा वयम् अधुना सः इत्यस्य कृते प्रयोगं कुर्वन्ति। सः गच्छति, सः आगच्छति, सः उपविशति, सः उत्तिष्ठति, सः पठति, लिखति, है ना? यदा अहं वदामि अहं गच्छामि, अहं किं करोमि? अहं गच्छामि। अहं किं करोमि? अहं किं करोमि? अहं आगच्छामि। अहं किं करोमि? अहं उपविशामि। अहं उपविशामि। अहम उपविशामि। अहम उत्तिष्ठामि। अहम किं करोमि? तिष्ठामि। हाँ, उपविशामि अर्थ किम्? ओ भ्राता, अधुना उपविशति उक्तम्। उपविशति, अहम उत्तिष्ठामि, पुनः उपविशामि। क्रियां पश्यतु। यथा क्रियां करोमि, जैसे क्रिया कर रही, मेरी क्रिया को देख करके आप पहचानो। उपविशामि, उत्तिष्ठामि। किं भवति उपविशामि इत्युक्ते? ओके मैम। उपविशामि, यथा उत्तिष्ठामि, पुनः उपविशामि। अस्तु? अधुना हिंदी तो न आवश्यकी? नो मैम। न महोदय। उपविशामि, न महोदय। उत्तिष्ठामि। अहं उत्तिष्ठामि। अहं किं करोमि? अहम उत्तिष्ठामि। अहम उत्तिष्ठामि। अहम पठामि। अहम किं करोमि? अहम अहम पठामि। अहम किं करोमि? अहम लिखामि। अहम लिखामि। अहम किं करोमि? अहम किं करोमि? अहम लिखामि। अहम पश्यामि। अहम किं करोमि? पश्यामि। अहम क्रीडामि। अहम किं करोमि? अहम क्रीडामि। अहम खादामि। अहम किं करोमि? खादामि। खादामि नहीं, खादामि। अहम खादामि। अस्तु, खादामि। हसामि। अहम किं करोमि? हसामि। अहम पिबामि। अहम किं करोमि? पिबामि। अहम वदामि। अहम किं करोमि? अहम वदामि। तर्हि वाक्यं वदन्ति। अहम पठामि, अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि। अत्र क्रियापदानि दृष्ट्वा वदन्ति किं किं कुर्वन्ति भवन्तः, क्या क्या करते हैं, बोलेंगे? सः गच्छति, अहम आगच्छामि, सः उपविशति, अहम पठामि। वाक्यद्वयं वदतु। वाक्यद्वयं वदन्तु। अहम पुस्तकं लिखामि। अहम पुस्तकं लिखामि। अहम लिखामि। उत्तमम्। अहम पठामि। सः लिखामि, सः लिखति। अहम पठामि, सः लिखति। अहम जलं पिबामि। अहम जलं पिबामि। अहम पठामि। अहम जलं पिबामि। सः लिखति, अहम जलं पिबामि। अस्तु, यथा अस्ति सः पठति, अहम भोजनं खादामि। अहम भोजनं खादामि। उत्तमम्। अन्ये और कोई बोलेंगे? सः गृहं गच्छति। सः गृहं गच्छति। उत्तमम्।
अधुना गच्छति अनन्तरं सः गच्छतु पठति सः लिखति गृहं गच्छति अहं गृहम् आगच्छामि आगच्छामि उत्तमं हाँ और कोई अहं कन्दुकं खेलामि अहं कन्दुकेन कन्दुकेन खेलामि खेला सः हसति सः हसति बैडमिण्टन् खेलामि अस्तु पर्याप्तं हाँ अहं जलं पर्याप्तम् अधुना यथा सः गच्छति सः गच्छतु भवान् गच्छतु सः गच्छतु सः किं करोतु सः गच्छति सः गच्छतु भवान् गच्छतु भवान् किं करोतु भवान् गच्छतु भवान् गच्छतु भवान् किं करोतु भवान् गच्छतु भवान् आगच्छतु भवान् किं करोतु भवान् आगच्छतु आगच्छतु भवान् उपविशतु भवान् किं करोतु उपविशतु उपविशति इत्युक्ते उपविशति न उपविशतु अस्तु आज्ञां दद्मः भवान् गच्छतु भवान् आगच्छतु भवान् उपविशतु भवान् उत्तिष्ठतु भवान् किं करोतु तिष्ठतु भवान् पठतु भवान् पठतु भवान् किं करोतु भवान् लिखतु भवान् किं करोतु लिखतु भवती लिखतु भवान् लिखतु अथवा भवती लिखतु गुंजन भवती लिखतु भवती किं करोतु भवती लिखतु भवती पश्यतु भवती किं करोतु पश्यतु यदा ऑर्डर दद्मः आज्ञां दद्मः अथवा रिक्वेस्ट कुर्मः तदा पठतु पश्यतु क्रीडतु इति वाक्यप्रयोगं कुर्मः सम्यक् अन्ये अपि क्रियापदानि सन्ति लिखतु भवान् पश्यतु भवान् क्रीडतु भवान् खादतु भवान् हसतु भवान् पिबतु भवान् वदतु अस्तु पुनः एतस्य श्वः अभ्यासं करिष्यामः अग्रे चलामः संख्यां वदामः यथा अस्ति एकम् एक लिखितमस्ति तर्हि किं वदिष्यामः एकम् यथा वाचयामि तथा वदन्ति एकम् द्वे त्रीणि चत्वारि पंच एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् एकम सप्त द्वे एकम यद् वाचयामि तद् वदतु है ना यद् वाचयामि तथा एव वदन्तु एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् वाचयामि अधुना षष्ठम कक्षायां छठी क्लास के बच्चे वदन्ति एकम द्वे
द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पंच पंच षट् षट् सप्त अष्ट जो बुलावे ना बुला यावत वाचयन् तावत् सप्त अष्ट अष्ट नव दश अधुना म्यूट भूत्वा तत्तो करिए। मैं जो बुला रही हूँ आप अपने आप बोलते रहिए, ठीक है। हाथ का संकेत ऐसे रहेगा सभी का, म्यूट होकर। सागर भवान यथा अहं वदामि भवान रिपीट करोतु। अलम भवान है ना, आप एकम। सागर आप अकेले बोलिए। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् यस मैम षट् सप्त सप्त अष्ट नव दश अस्तु। अधुना संख्यागीतं स्मरामः वदामः तर्हि संख्या स्मरणं भविष्यति। अस्तु अधुना वदिष्यति का अस्ति? मैम मुझे बोलना है। अस्तु तर्हि भवती वदतु। किं नाम अस्ति? स्वनाम वदतु पूर्वं। देबोलिना ते। अस्तु भवती वदतु। अहं वाचयामि, अन्ये सर्वे म्यूट् भूत्वा वदन्ति। यथा अहं संकेतं करोमि तथा भवन्तः भवत्यश्च कुर्वन्ति। वैसे आप सभी करेंगे, ठीक है। यथा अस्ति गीतम् अस्ति, पूर्वं संख्या भवति एकम् अनन्तरं द्वे। तर्हि एकं द्वे वदन्तु सर्वे। एकं द्वे वदन्तु सर्वे। आदित्य भवान् म्यूट् भवतु। देबोलिना वदति। सर्वे म्यूट् भवन्ति। अन्ये म्यूट भूत्वा वदन्ति। म्यूट होकर के बोले। एकं द्वे वदन्तु सर्वे। एकं द्वे एकं द्वे वदन्तु सर्वे। एकं द्वे वदन्तु सर्वे। त्रीणि चत्वारि आनयवारि। त्रीणि चत्वारि आनयवारि। पंच षट् कराभ्यां फट्। कर इत्युक्ते हस्त है ना, हस्तद्वयेन द्वाभ्यां हस्ताभ्यां कराभ्यां है ना, किं कुर्मः? फट् कुर्मः। तर्हि पंच षट् कराभ्यां फट्। सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ। सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ। नव दश भाषा प्रवेश। एकं द्वे वदन्तु सर्वे।
अधुना अन्य कोऽपि अन्य बालिका अथवा बालकः आदित्य भवान् वदति स्म देवोली मैम हाँ चलो तो सुहाना अन्यत् आदित्यः वदति अस्तु एकं द्वे वदन्तु सर्वे एकं द्वे वदन्तु सर्वे त्रीणि चत्वारि आनयवारि त्रीणि चत्वारि आनेवारि पञ्च षट् पञ्च षट् कराभ्यां फट् कराभ्यां फट् सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ सप्त अष्ट संस्कृतं निष्ठ नव दश भाषा प्रवेश नव दश भाषा प्रवेश। अधुना वदन्ति षष्ठम कक्षाया छात्र छठी क्लास के बच्चे वदन्ति आं महोदय। अस्तु एकं द्वे वदन्तु सर्वे एकं द्वे वदन्तु सर्वे त्रीणि चत्वारि आनयवारि त्रीणि चत्वारि आनेवारि पञ्च षट् पञ्च षट् कराभ्यां फट् कराभ्यां फट् कराभ्यां फट् कराभ्यां फट् सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ सत्य अर्थ संस्कृतनिष्ठ नव दश भाषा प्रवेश नव दश भाषा प्रवेश। अधुना सप्तम कक्षाया छात्र वदन्ति मैम अस्तु भवती वदतु नाम वदतु पूर्वं स्वस्य संस्कृते मैं भी बोलूं? मैं भी नहीं अहम् अपि किं वदन्ति अहमपि वदिष्यामि। महोदय अस्तु भवन्तः सर्वे मिलित्वा वदन्तु वदन्तु किमपि मैं बोलूं? नहीं अहमपि हाँ विधि वदतु विधि वदतु हाँ वदतु सर्वे मिलित्वा वदन्तु सर्वे मिलित्वा वदन्तु सभी मिल करके वदतु हाँ वदन्तु ओके। एकं द्वे वदन्तु सर्वे एकं द्वे वदन्तु सर्वे त्रीणि चत्वारि आनयवारि पञ्च षट् कराभ्यां फट् सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ नव दश भाषा प्रवेश एकं द्वे वदन्तु सर्वे एतस्य गीतस्य वीडियो निर्माय स्वस्य नाम पूर्वं पहले संस्कृते स्वस्य परिचय अनन्तरम् एतस्य गीतस्य अभिनयेन प्रस्तुति भवेत् तत्र वीडियोग्राफी भवेत् प्रेषयन्तु समूहे यथा तत्र अस्ति और इसके बाद में एकां क्रीडां क्रीडामः एकां क्रीडां सर्वे वीडियो म्यूट् भूत्वा वीडियो ऑन स्थापयन्ति चलिष्यति मुदित महोदय एवं अस्तु वीडियो ऑन भवति क्रीडां कुर्मः भवान् अपि करोतु तथा न मुदित महोदय प्रथमां क्रीडां क्रीडामः वयं यथा अस्ति क्रीडायाः नाम अस्ति आकाशः भूमिः पातालः अस्तु आकाशः इति वदामः संस्कृते अवज्ञानं भवति किं वदामि क्या बोल रही ज्ञानं भवति यथा अहं वदामि अवगच्छन्ति समझ में आगच्छति न मुझे नहीं आया मैं फिर से बताऊं ना महोदय क्रीडा गेम
संस्कृत क्रीडा आम महोदय। कुर्मः तथा ज्ञानं भविष्यति। हाँ, आम अभी हम महोदय। अस्तु आम संस्कृत में महोदय। अस्तु अस्तु पर्याप्तम् एतावदेव। अभी हम संस्कृत में क्रीडा गेम खेलेंगे। गेम का नाम अस्ति आकाशः भूमिः पातालः। अस्तु आकाशः वदामि तर्हि किं कुर्वन्ति, हस्तम् उपरि कुर्वन्ति अथवा हस्तम् उपरि कुर्वन्ति। अस्तु यदा भूमिः वदामि हस्तः कुत्र भवति, मध्ये। आकाश बोलने पर हाथ ऊपर, भूमि बोलने पर मध्य में और पातालः वदामि तर्हि अधः नीचे। अस्तु सभी को समझ में आ गया है? सर्वे ज्ञातवन्तः? अस्तु आकाशः प्रारभामहे। आकाशः, भूमिः, पातालः, पाताल अध है ना, नीचे ना, पाताल लोक नीचे, इसलिए आकाशः, भूमिः, पातालः, आकाशः, भूमिः, पातालः, पातालः, भूमिः, आकाशः, आकाशः, भूमिः, आकाशः, पातालः। अधुना अब मैं करूंगी, गलत भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, आपको देखना आप सही कर रहे कि आपको पता चल गया। आकाश कहने पर हस्त उपरि भवति, हाथ ऊपर, भूमि इत्युक्ते मध्य, भूमि कहने पर मध्य में, और पाताल इत्युक्ते अधः। अस्तु अहं शीघ्रतायां वदामि, पूर्वं किञ्चित् मन्दं भवन्तः कुर्वन्ति। आकाशः, भूमिः, पातालः, भूमिः, पातालः, भूमिः, आकाशः, आकाशः, पातालः, भूमिः, पातालः, आकाशः, भूमिः, आकाशः, भूमिः। अस्तु क्रीडन्तु, खेल लीजिएगा, आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, श्वः पुनः क्रीडां क्रीडिष्यामः। मैम इसका वीडियो भेजें कभी? आम महोदय। हाँ आप भेज सकते हैं, 2-3 बच्चे यदि है साथ में तो बना करके, या कोई बोल रहा हो और आप कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। संस्कृत क्रीडा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। शांति मंत्रम। हाँ प्रश्न अस्ति कस्यपि? आम महोदय। 1 से 10 पर्यन्तं गिनतिं स्मरन्ति? आम महोदय।